So today we are going to study about 10 famous Indian authors you must read. आपको पता होना चाहिए, you must know उनके बारे में. India top 10 famous authors. Okay, so can we start? Yes, English authors. Okay, English authors. So author number 1, Chetan Bhagat. Chetan Bhagat, cited by the New York Times in 2008 as the biggest selling English language novelist in India's history. ये सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल होने वाली मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन थी इंडिया में, द न्यूयॉर्क टाइम्स in 2008. Okay. Chetan Bhagat is author, screenwriter, columnist and TV personality. Chetan Bhagat is screenwriter also, columnist and TV personality. He is known for comedy drama novels. ये जाने जाते हैं इनकी कॉमेडी ड्रामा नॉवेल्स के लिए, मतलब हंसने वाली, बहुत ही कॉमेडी वाली नॉवेल्स के लिए. अबाउट यंग अर्बन मिडिल क्लास इंडियन, अबाउट यंग मतलब जवान, अर्बन मतलब मिडिल क्लास मीन्स ज्यादा रिच नहीं ना ज्यादा गरीब, मिडिल इंडियन. सम ऑफ हिज फेमस वर्क इंक्लूड्स. अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको उनके फेमस वर्क जो इंक्लूड 5 Point Someone. 5 Point Someone ये एक थी इनकी नॉवेल. 2 States एक थी और एक थी हाफ गर्लफ्रेंड, एक थी 1 Indian Girl. मतलब मैंने आपको 4 बता दी है. 5 Point Someone, 2 States and half girlfriend and 1 Indian Girl. Okay. Second is Amrita Pritam. Pritam indulged in poetry and literature at a very young age. अमृता प्रीतम इंक्लूड हो गई थी पोइट्री, मतलब उन्हें पोइट्री बहुत ही यंग एज, मतलब जब वो बहुत ही जवान थी जब से ही उन्हें पोइट्री में ले लिया था, जब से ही उन्हें पोइट्री में इंटरेस्ट था. विच इन्फ्लुएंस्ड हर टू बिकम अ पोइट. जिसने इन्हें एनकरेज किया, जिसने इन्हें मदद की कि ये पोइट बने. एंड नॉवेलिस्ट लेटर इन हर लाइफ, और उसके बाद उनकी लाइफ में देर बाद वो नॉवेलिस्ट बन गई. शी वॉज अ करेजियस वुमेन. ये बहुत ही करेजियस मतलब हिम्मत वाली औरत मीन लेडी थी. हु डिड नॉट फियर राइटिंग कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एरा. हु डिड नॉट फियर राइटिंग कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट. उन्हें बिल्कुल डर नहीं था कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स्ट लिखने में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एरा. She suffered through tough times during the partition of India. She suffered through tough times. उनने बहुत tough times में सफर किया, मतलब गुजारा, partition of India, which influenced her to write the Punjabi novel. जिसने इन्हें हौसला दिया कि ये लिखे पंजाबी नॉवल. इनकी पंजाबी नॉवल सुनिए. पिंजर, skeleton, Pinjar, 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 and in the bracket skeleton, which describes the helplessness of the woman during that era. Means जब वो बताती कि इसकी woman कितनी helpless थी during the era, and the discrimination they had to go through. और डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था गर्ल्स के साथ पहले, बट अब इतना नहीं होता है जितना पहले होता था. मुझे लगता है कि अब शायद होता ही नहीं. द नॉवल लेटर वॉज मेड इनटू अ बॉलीवुड मूवी विच वॉज हिट थ्रू आउट द नेशन. उसके बाद वो नॉवल बॉलीवुड मूवी में चेंज हो गई, मतलब वो बॉलीवुड मूवी में चली गई. विच वॉज हिट थ्रू आउट द नेशन. वो इतनी हिट ब्लॉकबस्टर हुई ना थ्रू आउट द नेशन, पूरे नेशन में. ओके. थर्ड झुम्पा लहरी. ओके. लहरी इज वेल नोन फॉर हर नॉवेल्स. ये जानी जाती हैं इनकी नॉवेल्स के लिए, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज के लिए भी जानी जाती है. She was born in London but relocated to the United States to her education from the Barnard College. She went east for her master's and attained her degree at the Boston University.
शी वॉज स्ट्रगलिंग राइटर, ये बहुत ही मेहनत करने वाली, स्ट्रगल करने वाली राइटर थी. एंड हर वर्क वॉज इनिशियली रिजेक्टेड बाय द पब्लिशर्स, और उनका वर्क पब्लिशर जो पब्लिश करते नॉवेल्स उनकी वजह उनसे वो रिजेक्टेड कर रहे थे उसे. अंटिल हर बिगेस्ट सक्सेस, जब तक उनकी बिगेस्ट सक्सेस नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुई थी. द इंटरप्रीटर ऑफ मेलाइट, उनकी सक्सेस क्या थी? इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज. ओके, this was a compilation of all her short stories about the life of immigrants in the post-partition India. After the runaway success, she wrote many other novels which are famous throughout India. इनने और भी novels लिखी जो बहुत ही famous थी पूरी इंडिया में. Continent and the world, some of the most famous ones being the namesake, Anacostum Earth, and the Lowland. Okay, fourth, Khushwant Singh. He was a journalist. Khushwant Singh was a journalist, editor and novelist. Born in Hardly during the time of British India. He received his degree at St. Stephen's College in New Delhi. Stephen's College in New Delhi and King's College in London. Okay. He initially started his career as a lawyer, after which he got the opportunity to become the editor of important journals and magazines. उनके बाद उन्हें एक अपॉर्चुनिटी ऑफर मिला, मौका मिला, जिससे वो जर्नल्स एंड मैगजीन्स में एडिटर बन सके, एडिटर ऑफ इम्पोर्टेंट. ओके, एज एन ऑथर ही रोट सम आउटस्टैंडिंग नॉवेल्स लाइक ऑथर के तरीके से, पोएट के तरीके से इतनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी, जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान इन्हें लिखी थी 1956. ट्रेन टू पाकिस्तान 1956. दिल्ली अ नॉवल ये इन्हें लिखी थी 1990 में. द कंपनी ऑफ वुमेन इन्हें लिखी थी 1999 में. ओके, और ट्रूथ लव अ लिटिल मैराइज इन्हें लिखी थी 2002 में. उसके बाद इन्हें द गुड, द बैड एंड द रिलीजियस रेडिकुलस 2013 में. अभी हम सोचे, अभी 2020 तो चल ही रहा है, 2020 से इनकी सबसे, अभी अगर प्रीवियस नॉवेल्स सोचें तो इनकी सबसे फास्ट वाली नॉवेल द गुड, द बैड एंड द रिलीजियस है, क्योंकि 2013 में शुरू हुई और 2013 को कुछ साल हुए हैं. ओके, और सबसे पहले इन सब में से 1956 वाली है. ओके, एंड फिफ्थ R.K. Narayan. He was born in Chennai and due to his father's transfers had to move around therefore many schools. इनके फादर का ट्रांसफर वाली जॉब करते हैं, वो करते होंगे, तो ना उन्हें चेंज करनी पड़ मैनी स्कूल्स. उनका ट्रांसफर जहाँ जहाँ होता था वहाँ उन्हें स्कूल अटेंड करना पड़ता था. उनके स्कूल्स तो चेंज होते ही थे. हिज इंटरेस्ट इन रीडिंग वॉज एविडेंट सिंस अ वेरी यंग एज. उनका इंटरेस्ट रीडिंग में ही था जब वो बहुत ही जमान थे, यंग एज में. एंड हिज हॉबी सून बिकम अ हैबिट. और उनकी जो हॉबी थी ना, हॉबी उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, फिर उनकी हैबिट ही बन गई. ही लेटर ग्रेजुएटेड एंड डिसाइडेड टू बिकम अ स्टे एट होम राइटर. उनने फिर ग्रेजुएशन पूरी की, फिर उन्हें डिसाइड किया, उन्हें सोचा कि वो बन जाए और एक राइटर बने, वो जो घर पर रह के ही राइटिंग वो लिखे नॉवेल्स वगैरह. हिज इनिशियल बुक्स वर नॉट दैट पॉपुलर अंटिल हिज थर्ड नॉवेल. उनकी और बुक इतनी पॉपुलर नहीं थी जो जितनी उनकी थर्ड नॉवल थी. उनकी थर्ड नॉवल का नेम द डार्क रूम. Narayan wrote many novels after this which were published and soon became a well-renowned author during his time in India. और बहुत जल्दी ही लिखते लिखते ये इंडिया के बहुत ही अच्छे पोएट ऑथर बन गए थे. Now sixth, Rabindranath Tagore. Even though Tagore received his education in law, he took great interest in Shakespeare. उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था शेक्सपियर में एंड हिज लिटरेचर, और उनके लिटरेचर में इंग्लिश राइटिंग.
Therefore, following his works, he became a poet. इसकी वजह से वो poet बने and author. His first poem, Mansai, was published in 1890. इनकी first poem क्या थी? Mansai, जो published हुई थी 1890 में. After which he gained immense popularity amongst Bengali readers. मतलब उसके बाद इन्हें बहुत पॉपुलरिटी मतलब फेम मिली, फेमस हुए ये बंगाली रीडर्स में. His most significant works include Gitanjali. Yeah, Gitanjali is very famous. I also know its name Gitanjali, which was a collection of poems. Gitanjali collection थी poems की. And Girl Pankaj, which are 80 short stories, जिसमें 80 small short stories थी. Okay. Now, 7th, Ruskin Bonds. Bond was born in Punjab, British Indian Athens. His education in Simla. After completion of high school, he moved to UK. After high school, मतलब high school में education के बाद वो गए UK. To enhance his writing career, उनके writing career को और अच्छा करने के लिए, enhance करने के लिए, he started his career as a freelance writer. उन्हें अपना career start किया था freelance writer, means simple writer. And eventually got jobs as editor in various magazines. और फिर उन्हें jobs मिलने लगी बहुत ही अच्छी magazines में. It wasn't until 1980 his novel was published, which became widely admired among readers. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. His best known work is इनका सबसे best work था The Blue Umbrella. The Blue Umbrella, a heart-warming story read worldwide. The Blue Umbrella, okay. 8. Vikram State born in Kolkata. Now it is not Calcutta, it is Kolkata. Okay, Kolkata. Graduated from high school. उन्हें graduation की high school and studies philosophy and study मतलब उन्हें philosophy के बारे में पढ़ा, politics, economics and purpose. Trinity College, Oxford, and graduated with a BA degree in 1975. Please write that point. Graduated with a BA degree. BA degree से और उन्हें कब ली वो डिग्री 1975 में. From 1975 to 1986 he pursued his PhD at Stanford. 1975 से लेकर 1986 तक इन्हें अपनी PhD डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की, कैलिफोर्निया USA. He is best known for his epic novel. इनकी सबसे फेमस नॉवल है, उसके लिए जाने जाते हैं The Suitable Boy. The Suitable Boy. 9. अरुंधति रॉय. राइटर, essayist मतलब होता है जो ऐसे लिखते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. Arundhati Roy is best known for her novel The God of Small Things. ये जानी जाती है The God of Small Things के लिए, which won her the Man Booker Prize for Fiction in 1997. Some of her other works include The Algebra of Infinite Justice, Kashmir, The Case for Freedom and Capitalism, A Ghost Story. Okay, now 10th, last but not the least, Sarat Chandra Chattopadhyay. He belonged to a poverty-stricken family as his father had irregular jobs. ये पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इन्हें पुअर फैमिली से बिलोंग मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग किया था. और इनके फादर की इरेगुलर जॉब थी. आपको पता है रेगुलर जॉब क्या होती है? जैसे परमानेंट, जैसे वो जॉब जब तक आपका आप रिटायर नहीं हो जाते हो मीन्स आप रहते हो जब तक रहती है रेगुलर, बट इरेगुलर कभी भी हट जाए, वैसी जॉब थी इनके फादर की इरेगुलर. However, his father was a dreamer and a writer, and it was his exuberance that inspired Sarat to become a novelist himself. उनने सरत को इंस्पायर किया कि वो नॉवेलिस्ट बने. He wrote his first famous essays only when he was in his teens. टीनेज आपने सुना ही होगा. इन्हें अपनी फर्स्ट फेमस एसेज लिखे थे उन्होंने टीन्स में. लेटर ही मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैगजीन्स. फिर उसके बाद उन्हें मैगजीन में कॉन्ट्रीब्यूट मतलब मैगजीन्स लिखी फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम से लेकर टाइम. सिंस ही वॉज ए फेमिस्ट कैटोपैथ
it was urgent to write about the biocry and spatial society. His most popular works are देवदास ने कब लिखी थी? प्लीज रीड योर देवदास व्हेन ही रोट. देवदास ने लिखी थी 1901 में लिखी थी. मीन्स जब स्टार्ट ही हुआ था, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट ही हुई थी. ओके, 20th सेंचुरी स्टार्ट ही हुई थी. सो 1901 पब्लिश्ड, और उनने लिखी तो 1901 में थी, बट ये पब्लिश थोड़ा लेट हुई. आई डोंट नो व्हाई, बट ये पब्लिश हुई 1917 में. नेक्स्ट परिणीता 1914 पब्लिश्ड. नाउ अब यहाँ पे वो नहीं है जो इन्हें जब लिखी थी, शायद पब्लिश्ड है. ओके, बिरजगांव 1914 एंड पली समझ 1916. ओके, thank you. If you like our videos, so like our channel and subscribe to the channel if you are new. And if you have any doubt regarding any author, so ask in the comment section.